सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the just solubility and further we have discussed about the solubility of solid in liquid. Now the time to discuss about the solubility of gas in liquid. So this is the very important topic. This is the B part as a solubility of gas in liquids, or you can say liquid. Solubility of gas in a liquid. This is the most important topic through which we will decide how we can form just carbonated water, or you can say just different kinds of the cold drinks and so on, a lot of conceptual question. So first of all we'll go with the just what is the meaning of solubility of gas in liquid. It was explained by Bunsen. So according to Bunsen, जिन्होंने पर्टिकुलर बंसन बर्नर भी डिस्कवर किया था, अकॉर्डिंग टू बंसन solubility of gas in liquid is directly proportional to the absorption coefficient. Absorption coefficient मीन्स जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. नाउ द इंपॉर्टेंट टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट? सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन coefficient at definite temperature and 1 atm pressure, total volume of dissolved gas, and how much? So you will say just dissolved gas in unit volume of solvent, in unit volume of solvent is called as just we can say absorption coefficient. और अगर पर्टिकुलर डिजोल्व गैस का अमाउंट ज्यादा होगा कोफिशिएंट, देन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हायर होगा, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हायर हुआ तो उस गैस के लिए पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी भी हायर होगी. दिस वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द एग्जांपल. We can say solubility of CO2, O2, N2, NH3 in water. This is the regarding to the example. Now the time to discuss about the effectant factors. So these are the effectant factors, means factors which influences to the solubility of gas in liquid. First is your nature of gas. This is the nature of gas. Second factor is your, we can say, nature of solvent. Third is your temperature. Fourth is your pressure, and fifth is your presence of other
substances. Other substances. These are the affecting factors of the solubility of gas in liquid. First of all, this is the nature of gas. Nature of gas. Regarding to it, gases which are polar or forms compound on reaction with solvent, they exist more solubility while which are just, you can say, non-polar and does not form any compound on reaction with solvent, on reaction with solvent, their solubility decreases, or you can say will be lower. So this was about the just meaning of solubility of gas in terms of the absorption coefficient. And what is the mean of absorption coefficient? डिफाइन है टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे किसी भी गैस का सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में, यू कैन से पर्टिकुलर सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम गैस का डिजोल्व है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Absorption coefficient is directly proportional to the solubility of gas in liquid. Example, solubility of CO2, O2, N2, NH3 in water. Affecting factors, these are nature of gas, nature of solvent, temperature, pressure and presence of other substances. नेचर ऑफ गैस के रिगार्डिंग बात करूं तो पर्टिकुलर जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है या पोलर हो, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाती या नॉन पोलर होती हैं, पर्टिकुलर उनकी सॉल्युबिलिटी लोअर होगी. ये था आपके पास में फर्स्ट लाइन. इसी सीक्वेंस में आगे की ओर चलते हुए बात करें, नेचर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करें तो हाउ एंड विच ऑफ द गैस आर मोर सॉल्युबल एंड विच ऑफ द आर लेस सॉल्युबल. So let's see. If we'll go with the CO2 as an example regarding to first affecting factor, this is the example. On dissolving CO2 in water, here will formation of carbonic acid H2CO3 and it further dissociates in 2 of H plus and CO3 2 minus. If we'll go with the SO2, on reaction with H2O it gives sulfurous acid H2SO3, dissociates in 2 of H plus and SO3 2 minus. Regarding to SO3, on reaction with water gives you H2SO4, which further dissociates in 2 of H plus and SO4 2 minus. If we go with the just NH3 in water, then here will formation of NH4OH, further dissociates in NH4 plus and OH minus. If we'll go with the just solubility of NH3 in HCl, here will formation of NH4Cl, dissociates in NH4 plus and Cl minus. These all gas forms compound and which further dissociate into their constituted ions.
So solubility for these gas, solubility for these gas, for these gases will be higher. This was regarding to just polar gases or which can react with the solvent. Now the time to discuss about O2, N2, H2. These doesn't form any compound with solvent, with solvent. So solubility for these gases will be lowered. इसीलिए पर्टिकुलर CO2, SO2, SO3, NH3 वाटर में और NH3 HCl में ज़्यादा सॉल्युबल होगी. ये था आपके पास में फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ गैस. Now the time to discuss about the nature of solvent. So this is the nature of solvent. Nature of solvent. For this it will be formation of solute like solvent. यानी कि इस फैक्टर क्या लो solute like solvent का कंसेप्ट अप्लाई होगा. हाउ? लिसन मी केयरफुली. This is the just your solute like solvent. So if we'll go with the just second factor nature of solvent, then if the gas, this is the solvent, solubility of gas, if just gas is polar and solvent is polar, if gas is non-polar and solvent is also non-polar, this is the non-polar, then for these two conditions solubility will be higher, increases because of both are same in nature. But if just gas is polar and solvent is non-polar, and if gas is non-polar and solvent is your polar, in that case solubility lowers, solubility lower होगी. ये था आपके पास में इफेक्ट एंड फैक्टर के रिगार्डिंग नेचर ऑफ सॉल्वेंट. इसीलिए पर्टिकुलर ड्यू टू दिस रीजन CO2 is more soluble in water while O2 is less soluble. We can go with the another example. Just what is that? That is your another example is your second. You can say NH3 is more soluble in HCl because both are polar, more soluble than the benzene because benzene is a non-polar. So this was about the just you can say first factor just nature of gas, second factor nature of solvent. Now the time to discuss about the temperature, effect of temperature. This is very important factor. This is the effect of temperature. Now this is the effect of temperature. If we'll go with the solubility of gas in liquid, then solubility of gas, solubility of gas in liquids is exothermic reaction. Exothermic
रिएक्शन मीन्स हीट का रिलीज होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने CO2 को वाटर में डिजोल्व किया, देन इट विल फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 और कुछ अमाउंट हीट का रिलीज होगा. सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नो डाउट एक्सोथर्मिक है तो इन दैट केस पर्टिकुलर, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि ऑलरेडी वो हीट को बाहर निकाल रही है, अगर आपने टेम्परेचर रिलीज किया देन solubility of gas decreases. इसीलिए पर्टिकुलर आपके पास में किसी भी वाटर में बैड स्मेल आ रही हो तो अगर हम उसको बॉयल कर लेते हैं तो वो बैड स्मेल रिमूव हो जाती है बिकॉज ऑफ solubility of gas is exothermic reaction. This was about the effectant factor as a third temperature. See the each and every factor because of this is too important. It will use of Henry law along this effectant factor as a pressure, so on. We have discussed three factors. One of the nature of gas, second is your nature of solvent, third is your temperature. Now we'll go with the just pressure. So this is the fourth factor. This is the fourth factor is your pressure. What is that? Pressure. According to Henry, because it was explained by Henry, just we can say at constant temperature, solubility of gas in liquids is directly proportional to applied pressure. तो अगर हम पर्टिकुलर यहां बात करें टेम्परेचर की, इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पीते हैं बिकॉज ऑफ CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए. और यहां बात करूं तो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक का जब फॉर्मेशन करते हैं तो CO2 गैस को डिजोल्व करने के लिए प्रेशर उसका इंक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. This was about the just effect of pressure, means we can say that on increasing pressure solubility of gas increases, while on decreasing pressure solubility of gas decreases. This was about the further just fourth factor. Fifth factor is your, you can say, presence of other substances, you can say presence of other substances decreases to the solubility of gas in liquids. So this was about the just solubility of gas in liquid and effectant factors. But remember one thing, if we want to get the tasty cold drinks, then temperature should be lower
And if you want to prepare the cold drinks, then pressure should be high at a constant temperature. This was all about your solubility of gas in liquids. So, dear doctors and engineers of the near future, मैं विजय कुमार सोनी आपसे फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर हेनरी लॉ के रिगार्डिंग व्हाट इज द मीन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ कहाँ अप्लाई होगा, हेनरी लॉ के लिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। पर्टिकुलर यहाँ जो बात की हमने कि इसीलिए जब अर्थ पे टेम्परेचर राइज होता है तो एक्वेटिक एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस O2 इन वाटर डिक्रीजेस। ऐसा कुछ और क्वेश्चंस भी आपके साथ में लेके आऊंगा कंसेप्चुअल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। यूं ही पढ़ते रहिए क्योंकि अब एग्जाम क्लोज है। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, जितना वीडियोस को पढ़ेंगे देखेंगे, उतनी प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सएप पे आप शेयर करेंगे तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो नो डाउट आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाएगी। क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जस्ट एंटायर और सैंपल पेपर, नोट्स और कुछ स्पेसिफिक थिंग जब भी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज छोड़ दें, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अब मैं नहीं रुकूंगा, अब नहीं थकूंगा क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे साथ है। यूं ही कारवा बनेगा, यूं ही आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और फतेह जरूर हासिल करके रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।